today at the Vogue Beauty Awards. और बस मैं यही कहना चाहूँगी, it's such an honor that I'm getting an award tonight. I think timeless beauty is quite special. But for me, I think beauty is all about your inner beauty that reflects on your face. So I'm feeling quite honored and I'm really happy to be here tonight. Well, I think it's Vogue, so obviously everyone's going to be really stylish and very glamorous. And I think generally I like to wear very sophisticated and sharp cuts. So that's me. मैं बस यही कहूँगी कि always be positive, क्योंकि आपका inner positivity आपके चेहरे के ऊपर आएगा. तो it's not about everything else, but it's about your inner self. Thank you. हाँ. Sorry? Well, it's a Monisha dressing gown. And I think, like I said, I like to wear very sophisticated and sharp cuts. So I think that's what I'm doing tonight as well. Oh, thank you. Like everyone is appreciating your charm. What you have to say, even you're considering your sister also. Well, no, I think my sister is my little baby. But thank you. I think it's been a great relationship with my co-stars in the industry and everyone out here. So I'm happy that people enjoy spending time with me or enjoy seeing my work. Thank you. Thank you. अच्छी फिल्म और ब्लॉकबस्टर सब तरफ आपकी चर्चा. Thank you very much. कैसा प्रतीत हो रहा है like him and the movie doing good? I think it's breaking all records. It's really amazing. I had a great time working with him. I think it was one of the best experiences I've had. So, and I did have a feeling that the film will do well because of the subject and everything. So, very happy, very ecstatic. I know, I'm really sorry. Actually, I've been shooting for a film called Ghoul and Qawwali का release एकदम अचानक तय हुआ और मेरा shooting इतना ये है क्या tight है that every day I'm trying to make phone calls and shoot, but it's so unfortunate. Beauty के क्या मायने? Beauty is in the eyes of the beholder. I believe that. I genuinely believe that. Oh, thank you. I think just be healthy, be happy. That's the most important. And I think you start finding somebody beautiful the moment you start becoming more familiar with the person, or you start seeing deeper than, and I also feel the imperfections are something to be cherished. अभी तो मैंने कुछ तय नहीं किया है. अभी तो मैं अभी जो शूट करूँ उसके बाद थोड़ा ब्रेक लूँगी और फिर तय करूँगी क्या करना है आगे. Sorry? Yeah, I should tell you, right? I'm wearing, Anaita styled me and I'm wearing Gauri Nainekar. And any particular trends that you're loving at the moment? I'm shooting non-stop, so there is nothing that I can think of apart from shooting. Thank you. Just in what capacity you're part of tonight, like you'll be presenting an award, getting an award. God knows. Am I supposed to tell? I don't know. You have to like, No, you have to wait and see. Thank you. mind smiling. Excuse me. Looking stunning and wonderful and refreshing. Those are lovely words. Thank you very much. Katrina, I'm sure you are getting an award tonight. I don't know. I'm on my way in, so if I go in, I can talk to you when I come out, and then I can talk to you all about it. Katrina, we were expecting you will be coming with shades tonight. Oh, no, I don't have. Everyone is applauding and wanted to know about this, the look and the song. And even Yasmin was here that you have worked so much hard on the song. Just tell us something you have been meeting for the first time. Yeah, and Kala Chashma is one of my favorite songs that I heard. When I heard the song, I said, okay, this is going to be a song which I'm going to have
after I think quite a while, a really good time dancing. And I think both me and Sid, we said, okay, come on, let's just go in the rehearsal hall and let's do this. And we just had a blast with Bosco and his team. We were just dancing, having fun. We would dance for 4 hours, then we'd sit, and then we'd do it again. And I think it was that's what shows. Is like there's this really fun energy, and I think that the response has been great so far. So yeah, let's see. किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिले गाने के लिए आपको? You know, today I was dubbing, and then I ran home to get ready, and then I've ran here. So I've seen like some 50 messages on my phone, but I've not read them yet. So tonight I'm gonna go and sit quietly and read all my messages. But I did see a message from our producer saying, and he seemed very happy. There was like a happy energy about his message. So I think it's a good response. Katrina, What's all your of people. favorite beauty tip? What's your favorite beauty tip? Favorite beauty tip? I think when you feel good about yourself, that's when you look good. I mean, I think that's the easiest connection to say. Katrina, lots of people in media and probably your fans are happy that you have joined social networking sites. That's a good connection. Yeah, I started with Facebook. So Facebook is the first platform which I've joined, and I'm really enjoying it. It's something I'm learning and I'm getting used to it, but I'm really enjoying it so far. So I'm taking one step at a time. Can you talk about your Vogue video awards? Like what are you wearing tonight? I'll talk about that to you on the way out. Okay. Katrina, पूछ लेते हैं Vogue के बारे में. बता दीजिए, like you have been associated with Vogue for some time now. Yeah, I think I'm not sure how many covers I've done, but I've done I think some of my most favorite pictures with Vogue, with the team. Anaita, she's been a person who has been working with me for a very long time, and I just think that she's got an eye for how to accentuate your own beauty rather than trying to make you fit in to what is the latest fashion or what's the latest trend. So every time Anaita will call me for a magazine, she'll think about it, like, you know, this will suit you or this will accentuate you. And I think that's what beauty is about. It's about celebrating your individuality. कटरीना अभी खबर आई है कि कटरीना अभी खबर आई है कि आपको कबीर खान की फिल्म ब्लू लाइट के लिए फाइनलाइज कर लिया गया। क्या कहेंगे आप? सलमान के साथ फिर से काम करने वाले हैं? No, in fact, Kabir's already in Kashmir, so I don't know unless I get on the plane tonight. But no, I think Kabir's already mentioned that. There's nothing like that. काफी समय से, but you're such a professional. Yeah, मतलब हर जगह. Yeah, I mean, of course, today was an important night, so I didn't want to cancel. In fact, मेरा सुबह 5 बजे shoot भी है, तो थोड़ी हालत ख़राब है आज, but I'm fine. परिणीति, कुछ कहना चाहेंगे? No, thank you. हाँ. परिणीति, कुछ बताना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? आप अवार्ड लेने आई हैं, प्रेजेंट करने आई हैं? जी, एक्चुअली मुझे आज एक अवार्ड मिल रहा है. इनफैक्ट जो भी मेरी फिटनेस की जर्नी रही है, उसको वोग फेलिसिटेट कर रहा है आज. सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. एंड इनफैक्ट इतनी फ़नी चीज़ थी, हम लोग जब ट्रायल्स कर रहे थे सुबह, तो जो वोग की टीम थी, उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल पहले मैंने उनको बोला था कि मुझे मिला था मोस्ट ब्यूटीफुल फेस और समथिंग लाइक दैट. और मैंने उनको कहा था कि अगली बार जब मैं आऊँगी तो मैं अपनी बॉडी के लिए अवार्ड विन करूँगी. एंड वही हुआ है. सो इट्स वेरी फनी कि जो मैंने उस स्पीच में कहा, इट्स एक्चुअली कम ट्रू. बट आई एम वेरी हैप्पी. बट आपने एग्जाम्पलरी चीज़ें की हैं, मतलब सॉरी, नो आई हैव. मतलब एग्जाम्पलरी चीज़ें की हैं, हमारा ड्रास्टिक एंड मतलब सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स. जी, वेल ड्रास्टिक तो डेफिनेटली था, बट काफ़ी देर की मेहनत, 1.5 साल की मेहनत है जहाँ पर मतलब आज यहाँ पहुँचने के लिए. बट आई एम ग्लैड कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकती हूँ. आई थिंक जब आप ऑन स्क्रीन होते हैं, यू हैव टू इंस्पायर योर फैंस इन डिफरेंट वेज. एंड मेरी जर्नी इस डिपार्टमेंट में लोगों को इंस्पायर कर रही है. सो आई एम वेरी प्राउड अबाउट दैट. आपने जो निशुम में गाना किया वरुण के साथ, उसकी काफी तारीफ हो रही है. क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले हैं गाने बना के? एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं. एंड मैं चाह रही थी कि ऐसा ही रिएक्शन हो, क्योंकि इतने टाइम बाद मैं बड़े स्क्रीन पर, इनफैक्ट परसों पिक्चर लग रही है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पिक्चर रिलीज़ हो रही है. सो आई एम वेरी हैप्पी. लोग मेरी लुक के बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं. ऑफ कोर्स जो बॉडी पे मैंने मेहनत की, एंड इस गाने के लिए मैंने बहुत देर तक मेहनत की थी. सो finally it showed on screen. Everybody's talking about my abs, which you know has never happened before. So I'm quite happy. अगर फैंस को ब्यूटी और टिप स्टाइल टिप देना चाहेंगे तो क्या होगा?
स्टाइल टिप वुड बी यार, नो योर बॉडी, नो व्हाट लुक्स गुड ऑन यू, एंड अपने दिल से अगर आप कुछ भी कंफर्टेबल पहनेंगे वो हमेशा दिखेगा. Firstly, do describe the look that you're sporting for the night. Oh, you should describe it. No, I think just simple, and it's not taken much effort, which is great. मतलब कोई आउटफिट जिसमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगे वो शक्ल पे दिख जाता है. तो it's just something very easy, very me, very understated. परिणीति, कई लोग चाहते हैं कि मतलब आप सानिया मिर्जा की अगर फिल्म बने तो उसमें आप जी, जी, रोल करें. जी. और आपके मित्र भी हैं, आपने उनकी बुक भी जी, लॉन्च की थी. जी, जी. व्याख्या कीजिए, मतलब बताइए इसमें. व्याख्या करूं? सानिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत टाइम से मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. इनफैक्ट हम लोग आपस में भी यही बात करते रहते कि हम दोनों इतने सिमिलर हैं एज पीपल कि डेफिनेटली उस बायोपिक के लिए अगर कोई एक्टर होगी तो वो मैं ही होनी चाहिए, बिकॉज आई नो हर सो वेल. बट या वो अभी स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई है, बट कभी भी होगी तो आई डेफिनेटली डू इट. आप चाह रही हैं कि फराह खान ही बनाएंगे, मुझे लगता है ऐसा. ऐसा है? हाँ. तो अगर ऐसा है तो मैं अभी उनको फ़ोन कर देती हूँ, कॉल पे लगते हैं हम लोग तीनों और ये स्क्रिप्ट सैंक्शन कर देते हैं. अच्छा, बिफोर यू लिव, अच्छी फिल्म है, हिट हुई है. नो ऑफेंस टू एनीवन. ओह, हाँ, मतलब सबके लिए रिगार्ड और रेस्पेक्ट. कई लोग चाह रहे थे सुल्तान में अगर आप होती. ओह, कई लोग चाह रहे थे. नहीं, एक्चुअली ये बहुत फ़नी बात थी क्योंकि ऑब्वियसली सुल्तान इस साल की बहुत ही बेहतरीन फिल्मों में से है, तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ अगर आप लोगों को ऐसा लगता है. बट आई डोंट थिंक कि अनुष्का से कोई भी अच्छी एक्ट्रेस हो सकती थी उस फिल्म के लिए. इन द फ्यूचर इफ़ एवर मुझे सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिले, आई वुड रियली बी वेरी ऑनर्ड टू वर्क विद हिम. सो फ्यूचर के लिए येस, बट आई थिंक सुल्तान जैसी भी है वो परफेक्ट फिल्म है, उसकी कास्टिंग परफेक्ट है और कोई बेटर नहीं था उस फिल्म को प्ले करने के लिए. चलिए, थैंक यू सो मच. आपकी तबीयत खराब है, आपको जाने दे रहे Thank हैं. you. अगली बार बिंदु के बारे में बात करेंगे. जी बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल, और थैंक खुश यू. रहिए, एंटीबायोटिक ले लीजिएगा. मैंने लेनी शुरू कर दी आज. थैंक यू, सो स्वीट योर सो मच. थैंक यू. बाय बाय बाय. Pose for the camera, 10 सेकंड. पोज टू द कैमरा. एक मिनट पीछे. प्रसंग सहित व्याख्या जो मैंने की है आज, किस पे, कौन सी, किस चीज़ पे? सानिया पे. आपकी स्माइल की थैंक यू गाइस, सॉरी आज हालत बहुत खराब है. थैंक यू. ठीक है. रणवीर, आज की शाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज की शाम एक्चुअली भी शुरू होने वाली है. मुझे जानता नहीं अंदर क्या होता है. ये मेरा पहला साल है. बट वोग इज़ एस्टैब्लिशमेंट, सच ए रेप्यूटेबल मैगजीन, और अनाइटा इज़ वेरी डियर फॉर हिम. मैं उसके बुलावे पे यहाँ हूँ एंड आई होप इट बी अ फन नाइट. क्या स्टैंडर्ड है आपकी ब्यूटी के लिए? क्या बहुत स्टैंडर्ड्स है, यू नो. मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, कपड़ों के स्टाइलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, प्रोटीन ट्रीटमेंट, ट्रेनर्स. तो जो आपको दिखता है ये सब की कुल मेहनत जब रंग लाती है तब हम दिखते हैं. तो इसके पीछे बहुत लोग हैं. फैंस को क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? किसको? फैंस को अगर फिट रहना है तो क्या टिप्स देना चाहेंगे? फिट रहना है तो मतलब आई थिंक हैप्पीनेस इज़ फिटनेस, जो आपको खुश करता है. आई थिंक ये जो एक नया दौर आया है कि सबको 6 पैक बनाने का, 8 पैक बनाने का, उससे खुशी ज़ाहिर नहीं होती. अच्छा खाना खाओ, अच्छा 8-10 घंटे सो, और एक बी अ हैप्पी पर्सन. आई थिंक दैट्स व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी, यस, व्हाट अबाउट इट? Oh, okay. It's Christian Dior, given by Anaita. Yeah. जब काम नहीं होता तो फुटबॉल होता है. ये पूरा साल मैंने इतना काम किया नहीं है, सो ऑफ कोर्स फुटबॉल भी माय फर्स्ट लव. तो अच्छा मौका मिल रहा है और इसके नतीजे पे यू बिकम फिट ऑल्सो. हाँ, लेकिन वो टीम बहुत वीक थी, वो कोई भी 5 गोल कर देता, तू भी कर देता. फिर बाबा रामदेव भी आए थे और उनका तो यूनिफॉर्म भी नहीं होता, स्टड्स भी नहीं होते. सो या काफ़ी आसान गेम था. मच मेरे ज़िंदगी का भी मच अवेटेड फिल्म है. अभी कुछ करीबन 3 साल हो चुके हैं कि फिल्म बनते बनते. बहुत ही स्पेशल फिल्म है, बहुत ही अलग फिल्म है, बहुत ही डिफ़िकल्ट फिल्म है. लेकिन आई थिंक जो अनुराग बासु है, जो उसकी जो जान है, जो उसकी जो सोच है, नज़रिया है, जो उसका दिल है, वो हमेशा एक फ़िल्म बनाते हैं. उसके पीछे एक सोच होती है, उसके पीछे एक ऐसी इमोशन आपको महसूस होता है जहाँ आपकी आंखों में आंसू होंगे और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी.
आई थिंक फिल्म बनने में टाइम लगता है. हम फिल्म ऐसे नहीं बनाते कि अभी एक्टर्स को 4 महीने डेट्स में उसमें ख़त्म कर लो. सो वी ट्राई टू मेक एन अमेजिंग फिल्म एंड आई होप कि जब ऑडियंस इस फिल्म को देखें उनको पसंद आए. आई थिंक ये फिल्म अगले साल अप्रैल को रिलीज़ होगी क्योंकि ए दिल है मुश्किल अभी दिवाली में रिलीज़ हो रही है. तो जाहिर सी बात है कि एक एक्टर की 2 फिल्म इतनी जल्दी नहीं आ सकती. तो अगले साल अप्रैल आएगी. नहीं जी, मैं अभी फ़िलहाल मेरे दादी के साथ रह रहा हूँ चेंबूर में. मैं अक्टूबर में शिफ्ट हूँ. आपको बुलाने का? नहीं, हाउस वार्मिंग तो मतलब अभी इतने घर हो गए मेरे पिछले साल. We need a bigger smile. Thank you. ठीक है ना? Okay. I like you. Thank you. तो मैं तो हर रोज़ बहुत एक्साइटेड रहती हूँ वो ब्यूटी अवार्ड्स के लिए बिकॉज आई थिंक एवरी वन इज़ ब्यूटिफुल स्पेशली ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आई थिंक दीज प्रोडक्ट्स ऑल द ब्यूटी प्रोडक्ट्स हेल्प एवरी वन ब्रिंग आउट द इनर ब्यूटी. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं एक अवार्ड देने वाली हूँ फ्रेग्रेंस के लिए. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. I'm a believer in inner beauty. I think if you're beautiful inside, you'll always look beautiful. So I think everyone's beautiful. I'm wearing Namrata Joshipura. I'm styled by Sanjana Batra, and she styles me for my show, the Tara Sharma show as well. Trends, I think the hair up in a top knot and tongue, and I think as long as you're comfortable, you look good. Thank you. I want to ask you about the next episode for the show. Tushar is coming. Tushar is on the next episode and he's talking about being a single dad and about his surrogacy, and also Dr. Firoza Parekh has come with him, who's the lady who helped make it happen. This is a big breakthrough, like from a celebrity's point of view, like Tushar coming up. So, yeah, I think it's very brave of Tushar to come and talk about it because I know he always had a desire to be a dad, but he actually walked the talk and he's become a dad thanks to surrogacy. So I think it's great. Before you leave, thank you so much. Thank you. For the electronic cameras over here. Thank you. Just back side. The one. Step back.
Hi. Good evening. Thank you. Woo! Oh my god. So lovely. I'll see you in a bit. Yeah. Okay, say. I'm wearing Gauri Nainika, happy color. I never know what is in, what is out. I think trends come and go. I have absolutely no idea what's happening. I just wear what I like, and I love my stylist. So. Beauty के लिए standards नहीं होने चाहिए. To me, beauty is about being happy. I think happy girls are the prettiest girls, and really it's about that. Are you afraid of aging? I haven't thought of it yet. When I get to it, I'll discuss it with you. I think mostly fashion tips again are about actually doing what makes you happy. I think if you wear stuff that makes you happy and makes you feel confident and beautiful, you will look beautiful. So it's about what suits you and what really works for you. अदिति, हम लोग आपका बिहारी गर्ल के रूप में देखेंगे. Soon. Excited for it? Yeah, I've actually not been here. I've come down for a day just to sort of be with them and to do this. But I'm shooting with Manisha just now, so I'm not really here to do that. Yeah. Thank you so much. Have a pleasant evening. But before you go, please pose for the camera. 2 feet behind the barricade. This is 2 feet. आप अपने बाएं से करके सारे कैमरास को देख रहे हैं और राइट में आना है. स्माइल के साथ. Too many instructions. Take a swing if you want. Thank you. Oh, Ralph Lauren. Ralph Lauren. Yeah, tell me. Very good evening to you. Good evening. Yeah, all of us want to know about your outfit tonight. Oh, so I'm wearing Ralph Lauren, and my stylist Bornali basically picked this out for me. I'm wearing Minerali jewelry with it, and just keeping it simple with a fun ponytail and like light lipstick. Chunky tonight. Yes, Very excited. I guess so. What are the expectations from the awards? I actually am dying to see the makeup category. I really want to see who wins because I'm really into makeup and beauty, so it's gonna be exciting. Well, I'm loving like the dark lipstick trend that's going on, as well as like what else is going on? Wait, I forgot. I've not been here for a while. Mainly just like the dark lipstick. So let's see how it goes.
Yeah. So I'm doing Kung Fu Yoga with Jackie Chan, and I'm actually going back now in August to dub for it, and it's out January 2017. So excited. Yes, he did. Well, he just surprised me with the cake. I was traveling on my birthday. Actually, I was in a plane, and then I landed, and I went straight to his office for dinner, and then like the crew was there and the cast was there, so it was really sweet. Thank you. But before you leave, just pose for the cameras. Yeah, I want to only deliver young people. I'm good looking. You want young and good looking people. You know, just reduce my market value. Thank you. करिश्मा भाई हाँ हाँ. करिश्मा आज की शाम के बारे में क्या कहना चाहिए? Well, very happy. Karishma, actually, electronic cameras को मिला नहीं आपके just pose for 10 Thank you. One back.
Good evening, sir. Good. How are you? I'm so fine. Thank you so much. You're looking ravishing. Thank you. We want to know about your look tonight. Shall I answer his question because he asked me something? ब्यूटी में मेरा दिमाग में क्या है ब्यूटी के बारे में क्या का मतलब मैं बहुत ही मिस इंडिया टाइप का जवाब देने वाली हूँ आई थिंक ब्यूटी इज़ अ वेरी इट रियली इज़ कम्स फ्रॉम द इनसाइड और ये मेरा मानना है कि इफ़ यू फील गुड देन यू लुक गुड एंड दैट्स व्हाट ब्यूटी इज़ two words, yoga and pani. Yoga, pani. Pani, yoga. Just lots of water and lots of yoga. So it's an Amanda Wakeley dress. I love champagne. It's one of my most favorite shades for makeup and for clothes. And I wanted to go with a very minimalistic sort of vibe. And Anaita and the girls put together tribal jewelry, which I really like. So yeah, just going for a strong, independent woman kind of vibe. Yes, stripes are back. But I mean like 80s when I was in college, stripes and ribbed material is back and I love ribbed material. You will be performing? I have been performing. Performing tonight? Oh, no, I'm hosting. Okay, good. Sir. But can you like sing a line for us? Make wonderful? No. I'm gonna say no. Okay, thanks guys. Just pose for the camera. Sarah. आप कदम नीचे हो गया. Okay. All of us want to know about what are you wearing tonight and your style tonight. I'm wearing Sonakshi Raj and she styled me. What expectation? क्या उम्मीदें हैं आज आपकी? Or are you presenting an award? No, I'm not presenting an award. I'm just here to attend, and I love Vogue. It's just so interesting, and it's really nice the way that products and things get an award. It's really great. Very excited. Tell us about the current trends that you're loving. In my Current trends that you're loving. I always like a nude look with dark lips, and that's my thing. Yasmin, almost all the people are under your wings now for training everyone. Tell us something about that, and who's your favorite? The only thing I have to say right now is watch Kala Chashma. And you'll know what's happening in my life because Katrina looks fabulous and that was a lot of hard work and you can see it on screen. And the abs are sponsored by you? I actually didn't sit and make her abs. I just helped her with her workouts to get them with the right food. I didn't sculpt them at all. That was all her doing and God's. And Deepika also was like under you? Yeah, Deepika was working with me before she went for the XXX and Alia's working with me right now as well. So what's the secret? Like one thing which... Their secret is just me.
I'm the secret. Yeah, I'm the secret ingredient for all of them. Any advice for the younger lot who is coming? Well, I have to tell the younger lot that all these people have achieved what they have with only dedication and commitment. And as busy as their lives are, they're really dedicated and committed to themselves, to their workouts, to their body, to their food, to their health. So if you want to look like any of them, all you need is dedication and commitment. And Yasmin. यास्मिन आपने कहा कटरीना के बारे में बताया बार-बार लेकिन उस गाने के लिए पर्टिकुलर ट्रेन किया है थोड़ा सा ट्रेनिंग एक्चुअली कटरीना हमेशा ट्रेन करती है और जब कोई गाना होता है तो वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करती है. वो गाने के दौरान उनको बहुत सारी प्रैक्टिस और रिहर्सल करनी पड़ती है और मोस्ट पीपल रिहर्सल के समय वर्कआउट नहीं करेंगे क्योंकि थक जाते हैं. क्योंकि रिहर्सल अगर आप काला चश्मा देखोगे तो देखोगे कि कटरीना ने कितनी हार्ड और सिद्धार्थ दोनों ने बहुत ही हार्ड डांस किया है. मगर उसके बावजूद वो आती थी जिम में वर्कआउट करने, कभी 10 बजे रात को, कभी 11 बजे, जब भी रिहर्सल या शूट ख़त्म होता था वो वर्कआउट करती थी. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द डेडिकेशन टू अंडरस्टैंड कि आपको फिट रहना है. Then it's very easy to tweak it when there is a show or a song that comes up. But the basic ingredient is fitness. मैं कभी सेट पे नहीं जाती हूँ, ना किसी के घर जाती हूँ वर्कआउट करने, सब मेरे पास आते हैं. It depends whether men want to join because Katrina Kaif, Deepika and Alia come or whether they really want to join for their body. And I screen that before I allow men into my gym. You can come anytime. Thank you so much. You're welcome. You too. Thanks. बधाइयाँ, शुभकामनाएं आपको. Well, I love coming to the Vogue Beauty Awards every time. Tonight I was going for more of a clean beauty look, just pulled back hair, natural makeup. I'm wearing a dress by Marchesa, Tarun Tahaliani earrings, and jewelry on my What capacity you are part of tonight? Like you are receiving an award, getting an award. Let's see. Tonight I have to probably make an early brain check, kind of. No dance. But yeah, probably have to leave early because I have a shoot tomorrow. So just here to say hi to everyone. And any particular trends that you're loving at the moment? I love bold eyebrows. Tonight I'm very natural, but usually I love to have bold eyebrows. I think that's a really cool trend right now. Do you have any curiosity like about your upcoming project? Nitya, Neha, we eventually request you.
Sorry. I'm doing 2 projects right now, but tonight I'm here for Vogue. और हाउस वार्मिंग पार्टीज की नौबत ही रही जी थैंक यू क्या कहूँ मैं? It's going to be a lovely evening filled with fashion, fabulously dressed people. It's the beauty awards. It's about being beautiful. आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस ड्रेस में क्या कहना चाहेंगे अपने स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में Style statement, I think आपको दिख गया है कि मेरा style statement क्या है. I believe in being comfortable. I think if you're a good person inside, it shows on your face. So I'd like to, in fact, tonight talk about your inner beauty, which is so much more important. And if you enjoy dressing up like I do, and that's why I like to dress up and wear fun clothes, because it's actually something I enjoy. So please do it. But if you don't have to. Beauty tips: eat healthy, live healthy, and get lots of sleep. तनिषा, आप अवार्ड प्रेजेंट करें? I have no idea right now. Tanisha, would you tell us like what are your standards for beauty? I actually I think people are beautiful. When I get to know somebody better, I find them more beautiful because for me it's all about who the person is. That's my standard for beauty. Face, the outside beauty is always what is reflected inside. So I think the more beautiful you are inside is what will be beautiful. सबसे सुंदर अभी कौन है? मालूम नहीं, पता चलेगा आज रात को कि सबसे सुंदर कौन है. Thank you.
Just post to the camera. आपको करीब आधा मिनट आप आए थे? हाँ, मेरा कैमरामैन आगे था लेकिन आप इतनी व्यस्त थी ना तो आपकी नजरें गायब थी. Thank you so much. Have a wonderful evening like you are. Excuse me, here. Straight here. Now, excuse me. Right here. I'm straight here. And here. Smile and see. You're over here. Excuse me, ma'am, here. Yeah, this side, ma'am. Ma'am, here. Take as many now. Vogue's Instagram account is just here. This is final. Just take it down. Ma'am, here. Oh, yeah, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, यहाँ नीचे. Ma'am, यहाँ पे. Smile and say. I'll just and then you can just Want to know about your expectation and style and your dress tonight? My expectations in style. Yeah, for tonight. Just keep it glamorous, keep it fresh, and be yourself and have fun. किसकी dress है आज आपकी मतलब? This is something that my stylist has given me, and it's styled by Sabina Haldar. किस कैपेसिटी में शामिल हो रहे हो आप? Like presenting an award? No, I've just come to have fun tonight. ना एक चीज़ काफी आपके हम लोग स्नैपचैट फोटोज वगैरह देख रहे हैं आजकल क्या चल रहा है? मतलब? नहीं हमने कई फोटोज वगैरह सब फैमिली वगैरह देख रहे थे ना. हाँ जी. Having a lot of fun. Yeah, having fun, living life, enjoying my youth to the fullest. Thank you so much. Most welcome. Thank you. Ma'am, here. Right here. Madam, straight here. Now. Take it left also. Over here. Right down. Ma'am, here. Come over here. Clear. Hi. Liana, this side. Hello, how are you? I'm straight. Your voice, I didn't see your face. Stop. Raman, back to work. Turn a bit more, yeah. And turn a bit more. आप काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हो. Just chilling back. Interesting. Well, I think the first time I attended the Vogue Awards, the Style Awards, Beauty Awards, I was given one, so it's kind of a special occasion for me. I like coming back,
I think it's such a integral part, you know, हमारे लिए, because hair and makeup is such a big thing for us, and it's nice to know what new products are really the favorites among the fashionistas and of course the experts as far as beauty and makeup is concerned and hair and style is concerned, and that's Vogue for you. So I love coming back. It's amazing. Hello, how are you? You lost a lot of weight. Missing you. I'll be back soon. Yeah. 14 days to go. 14 days, is it? 2 weeks? Really? I've stopped counting. I'm too nervous. Yeah. Wonderful. It's wonderful to see you. Thank you. Stunning. Thank you. And at a point we couldn't recognize, and I asked the person. बाल छोटे हो गए ना इसलिए. What's your style? ये नई style के बारे में बताओगे? What's my style? I think it sort of reflects my mood. I'd actually rather be in track pants right now and sneakers like one of you people, but I had to dress up today. But I think it's just a reflection of my mood. So like today I had this beautiful gown to wear by Cavalli, and I figured why not style the hair the way it is, you know, the short hair. It's kind of new for me. I'm still getting used to it. What are your standards for beauty? For beauty, I think I genuinely don't feel that beauty is skin deep. No matter what you're going to use on your face, no matter how many facials you do, you won't look as beautiful unless you're really happy from within, really healthy from within. So I genuinely don't think that that's what beauty is, but it goes a long way if you have the right products with you. And it can help you out. And yeah, I think that's what beauty is for me. Any particular trends that you're loving at the moment? I'm loving my short hair. I love that it takes me 10 minutes to wash my hair now instead of half an hour. So I'm actually enjoying it. I'm not a big follower of trends, so for me to keep track of trends is something that I really can't do. So. इलियाना, अगर fans को कोई beauty tips देने चाहें तो हाँ देना जी. होगा तो क्या होगी वो tips? Beauty tips. I think बहुत सारे लोगों ना, what they do is especially they cover their face with too much makeup, and they try and copy makeup exactly to what they see on, say, like, you know, their favorite stars. So I think क्या करना चाहिए आपको is like choose a feature that really works for you. Like if your eyes are really beautiful, then focus on your eyes, but don't just overdo everything, and don't try and cover what you look like. I've noticed basically brides do that. I mean, notice on their wedding day they look so different. So just try not to like cover yourself up and just enhance what you already have, and you're beautiful just the way you are. You don't need to cover up too much. So. बस जाते जाते आपकी फिल्म जो रुस्तम आ रही है हाँ जी. उसके सामने रिलीज हो रही है बहुत जुदाड़ो. Yes. क्या कहना चाहिए इस क्लैश के बारे में? बहुत देखो मेरे हिसाब से तो क्लैश नहीं है. आई थिंक दोनों बहुत ही डिफरेंट फिल्म्स है, एंड I think there's so much hard work that's gone into both films. You know, Mohenjo-daro is such an epic film, and I think हमारे लिए Rustom has been such an epic film emotionally. So I think both are really big scale films. We've got great performers in both films, and Akshay keeps saying that we're going to have a joint party with Hrithik once both films comes out. So I think both films are going to do really well, and well, all the best for both of us. That's all I can say. You will drowning yourself in the promotions now? Yes, very much so. I have to be up at 3 o'clock tomorrow morning, so I better go. Yeah. Can we suggest like giving the beauty tips like as you suggested, like so can we publish your photographs and ask the people to go on your account and see your photo for suggestions? If you want to, yeah, I suppose, yeah. Yeah, sure. Thank you so much. just इलियाना just pose for the camera. Just pose for the camera. I've got Cavalli on. Ileana, if you're not done, come pose for us. Quick pose, like 10 seconds. quick pose. 10 seconds. 10 second pose. Wow. The condition is you have to smile. You don't know that sexiness doesn't smile now. Come. Anything for you? Come. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, you know what? What ऐसा कुछ नहीं आई. Karishma, कैसी how was the evening? Oh, it was absolutely wonderful, and like I said, winning this award was very special. दिखाइए award दिखाइए. अच्छा, okay. मैं दिखा देती हूँ. Okay, yeah.
ageless beauty. मैंने आपको पहले ही कहा था आपका charm ऐसा है कि like you. No, thank you so much. Okay, Karishma, and one thing more, like everybody wants to ask, कुछ मिले नहीं थे, waiting for the new arrival in the family about. नहीं, thanks for बोल रही है वो. Well, no, we are very happy and very excited, and of course we are waiting, eagerly awaiting. Thank you. Yeah, any future. अभी बस. Next Okay, I think. Thank you. Karishma, Solo. Yeah. If we just leave this one to be Yeah. Turn. Right here. Thank you. Wait. Only car. Just take it. The clutch, no? Not in love with it. Not in love. Right here. Krishna, yeah, down. Go here. Monica. Yeah. Monica, yeah. Multitasking. Yes. Monica, yeah. Straight, yeah. And here. Monica, yeah, straight. Yeah. Stay down. Right here. Thank you. So bossy. No, I'm kidding. You want to take a swing? Monica, sure. Yeah. For us. Thank you. Hi. Everyone was waiting for you. Where should I come? Good? Yes. Madam here. Excuse me, ma'am. Madam, here, please. Over here. Right here. Right the right side. Madam. Madam, here. Madam, here. Thank you guys. Thank you. Sure. How are you? Madison, right? I have to say Madison, right? What do I have to say? Oh, sorry, sir. Okay, now? Next. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आज मुझे बहुत बुखार है एक्चुअली, तो आज मेरी सेक्सी आवाज़ निकलने This is a Tiska Chopra. Wow, really? Yeah. Hi. Good evening. Wait kar rahe the, like when you will arrive and we will ask questions to you. Okay then, I'm ready with my answers. Thank you. She wants to know, like we also wants to know about your outfit tonight. Well, it's been styled by me and my stylist. It's been made by us. So you are starting a new line of yourself and making No, I'm not starting harder anything. for the like Sonam Kapoor and Kangana and everyone. I like to wear what I like to wear. I'm not trying to make anything harder for anyone. They're extremely well-dressed ladies and I think they're extremely stylish. Thank you. Thank you. Matching hairs and everything. Thank you. इसका जाते जाते अगर आपसे पूछा जाए फैंस को क्या टिप्स देना ब्यूटी टिप्स तो क्या Use the best products, drink a lot of water, sleep well at night, and don't bitch about anybody. Any particular trends that you're loving at the moment? I don't know, I think I'm in a metallic phase right now. I'm loving everything metallic. And I'm loving, yeah, which is why I had to custom make a gold. Yeah, you like? I love it.
You love dreams. इसका जहाँ से भी प्रश्न आए देखना सामने आ Acha. Yes, I'm in a metallic phase right now. I love everything metallic. So yeah, I had to make something for myself because I couldn't find a gold metallic dress. So इसका काफी घूम रही हैं आप, ट्रैवल कर रही हैं थोड़ा बहुत कुछ चेंज आया, लाइक न्यू एक्सपीरियंसेस वुड यू लाइक टू शेयर एंड अबाउट व्हाट यू प्लान फॉर द फ्यूचर? I think Bombay is best in the rains. यहाँ से बारिश में नहीं जाना चाहिए. उसके पहले का मौसम और उसके बाद के मौसम में ज़रूर चले जाना चाहिए. That's intolerable. और कहाँ देखेंगे हम आपको? Soon you'll see me in a film called The Bioscope Wala and another film called Three Dev. These are my two new releases this year. And other than that, I'm getting into producing. So you might see something which I produced myself, but that's a little early right now. अभी उसमें काम जारी है. क्या आप निर्देशक बनना चाहेंगे? Never say never. अभी तो नहीं. अभी तो I think मैं बाकी के निर्देशकों को मौका देना चाहूँगी कि मुझे निर्देशन दें. आपको लगता है कि कई अभिनेत्रियां प्रोडक्शन में आई हैं, निर्माता बनी हैं, ये एक ग्रेड अप है, लाइक गिव्स यू मोर सब्सटेंशियल इन द इंडस्ट्री, लाइक जैसे कई अनुष्का एंड एवरीवन इज हैव बिकम प्रोड्यूसर्स, प्रियंका. आई थिंक कि अगर 200 साल बाद हमारी फिल्मों को देखा जाएगा तो तब ऐसा लगेगा कि इस ज़माने की जो महिलाएं थीं वो पानी के पास घूमती थी और छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, मात्र वही करती थी. तो हमारे ज़माने की औरतों की कहानियाँ, सच्ची रियल कहानियाँ, फ़नी, मैड, क्यूट, ड्रामेटिक, क्रेज़ी, वो सब कहानियाँ हैं ही कहाँ. कि एक औरत आज के ज़माने में अपनी ज़िंदगी जीती कैसे है. ये जर्नलिस्ट हैं, ये लोग क्या करती हैं, कैसे जीती हैं, ये नहीं है. दे डोंट वेयर शॉर्ट क्लोथ्स एंड दे नॉट हैंगिंग अराउंड नियर स्विमिंग पूल्स एंड लुकिंग एट मेन एंड थिंकिंग यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन माई लाइफ. और शादी का इंतज़ार नहीं कर रही हैं सिर्फ. इनकी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है. सो आई थिंक दोज स्टोरीज आर द स्टोरीज आई वॉन्ट टू टेल. थैंक यू. Thank you so much. Have a Thank you. And before you go, just pose for the camera. ये पीछे है. ये राइट स्पॉट. आप ही हैं जिसने पकड़ा है राइट स्पॉट. आप ही हैं जिसने पकड़ा राइट सुर. थैंक यू. All inspired by you. Have a pleasant evening. Hello. Yes. I think so. Here we go. Okay. Smile and shake. Madam here. Ma'am here. Madam here. Head down. Ma'am here, ma'am. Okay. Address again. Happy evening, Katrina. Happy evening. Happy evening to you too. And very belated happy birthday to you also. Thank you very much. सब मिली नहीं ना, तो like everyone. No, I'll just get on. Go on stage and then पक्का I'll पक्का आ रही हो ना? With award. Flawless face. आईना लेके खड़ा होना. Thank you for obliging us. Katrina, with your award. Yeah. This side. I'm here, right side. Ma'am here. Ma'am here. Ma'am here. Ma'am here. Katrina, स्टील की बात बोलिए. इलेक्ट्रॉनिक का रह गया. अरे नहीं. बहुत इस्तेमाल आपका. कैसा रहा आज का ये यहाँ पे आपका आना? बहुत अच्छा. Silence. मैम यहाँ बैठ के बात कीजिए. Silence.
हाँ, आज की शाम कैसा रहा यहाँ पे अंगारे में? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया और अवार्ड भी मिला तो जी थैंक यू, तो बहुत अच्छा लगा. किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला बताएं हमें? The award was called the face to watch out for. So अब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है मुझ पर. जी जी, बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके प्रेशर शोज किए हैं वहाँ पे और अब जी यहाँ पे आपकी फिल्म आ रही है रईस, जी आप भी लगती भी रईस. मैं मतलब खूबसूरती में मैं कह रहा हूँ. मुझे नहीं पता मैं लगती रईस हूँ, मगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ. मैं ये मान लेती हूँ कि ये अच्छी बात है. माशाल्लाह बहुत. कितनी एक्साइटेड हैं आप? रईस आप शाहरुख खान के साथ फिल्म कर रही हैं जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में काफी मकबूल है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? आपका सपना पूरा हुआ शाहरुख खान के साथ काम? बिल्कुल, सपना भी पूरा हुआ है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन इस सबसे ज़्यादा नर्वस भी हूँ. ऐसा लगता है कि प्रेशर है कि कुछ करके दिखाना है, तो there's nervousness. एक यादगार मोमेंट अगर शाहरुख खान के साथ हम शूटिंग के दौरान पूछो तो क्या होगा? आई थिंक मेरा पहला सीन ही उनके साथ था और मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं होगा और मैं आराम से अपने डायलॉग, और जब वो सामने है तो मैं सब कुछ भूल गई, सारे डायलॉग भूल गई, तो वो हमेशा याद रहेगा. We've been waiting so much for your debut in Bollywood, and we're waiting so much for it. You must be even more anxious and impatient. I am because it's been, we've been shooting it since last year, so I'm anxious, I'm impatient, I get nervous, I'm constantly fluctuating between all the emotions, but I hope that it goes well. भाई ना तड़प बहुत ज़्यादा होगी ना, मतलब खुश हो जाता है ये अपने साथ. जी. क्या कुछ अपने शब्दों में? नहीं, बट आई थिंक ये एक कॉल है जो प्रोड्यूसर्स लेते हैं, तो आई जस्ट होप कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए. Okay, coming back to beauty. Well, I think it's very simple. I use a good basic moisturizer. So I use a good basic moisturizer, and but rest, I'm not too fussy. I'm not very fussy with my beauty products and I'll use this or that. It's just basic. एक बहुत अच्छी ब्यूटी टिप दूँ, if you can get almond oil, it's the best thing for skin. You can wipe your makeup with it, you can put it on and just use it as a face oil. It's the best thing. Otherwise, obviously, invest in good products, I would say. आपको लगता है कि आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करिए for your country, for fellow men, women out there in your country, like as representing a women, कई तरह की चीज़ें बिल्कुल होती. जी. उस पर आप अपने आप बताइए. जी, I think that we are all, मुझे लगता है कि जो हम people like me and other actors, artists in general in Pakistan, we are trying and we have been for years representing that part of our country, and I hope that I can do a good job with it, because I think artists, मुझे पहली बात तो ये है कि सारे मुल्कों में आर्टिस्ट होते हैं और वो मुल्क सबसे ज़्यादा फ्लरिश करते हैं जहाँ आर्टिस्ट को इज्जत दी जाती है. So I think it's very important that we give artists respect. माहिरा, आपने वहाँ पे कई सीरियल्स में काम किया है. अगर आप यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो कौन से सीरियल में काम करना चाहेंगे? मैंने यहाँ सीरियल्स नहीं देखे हैं. मैंने यहाँ के सीरियल्स नहीं देखे हैं, लेकिन फिल्में बहुत देखी हैं. लेकिन सीरियल्स पता नहीं क्यों वहाँ इंडियन फिल्में बहुत देखी जाती हैं, लेकिन सीरियल्स भी देखे जाते हैं. लेकिन मैंने लास्ट वो क्योंकि सास भी कभी नहीं देखा था, वो लास्ट कैसा लगा था आपको? वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. मैं छोटी थी लेकिन मैं भी बहुत मज़े का लगता था. आप सास बनना चाहोगे या बेटी? मैं पता नहीं ये किस तरह का सवाल है. ऐसी सवाल है. सास, बहू या बेटी, सभी तो बनना पड़ेगा. वहाँ की सीरियल्स काफी मकबूल है यहाँ पर इंडिया में, उस पे क्या कहेंगी? आपके सीरियल्स यहाँ भी देखे जाते हैं. जी. काफी मकबूल है यहाँ पर पाकिस्तानी सीरियल. जी हैं, बहुत. और यहाँ के भी वहाँ पे काफी लोग देखते हैं. जी, बहुत देखते हैं. इनफैक्ट मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे जो लोग पहचानते हैं वो सीरियल्स ही से पहचानते हैं. मुझे रईस भी सीरियल ही की वजह से मिली, टीवी की वजह से. The call from the PR team. पूछने को about your dress tonight. What are you wearing and your. आपको दिल नहीं चाह रहा था पूछने? Actually, second last सवाल था. मैं तारीफ तो पहले आपको. तो
बताएं आप अपनी मतलब स्टाइल के बारे में। Okay, okay. I'm wearing Manisha Jaising, and yeah, and it's just I felt most comfortable in it कि पहन लिया और where I've done it. You want me to do it here? Okay. Madam, I was asking you want to know about the upliftment of women and empowerment of women in your country. Yes. There are lots of incidents happening, Yes. and you must be knowing Yes. about it. Yes. Yeah, if you're Okay. Okay. देखिए क्या मुलाकात नहीं होती तो रईस के सारे प्रमोशन के समय उससे पहले आप बता दें उनको कंफर्ट करना हमारे गेस्ट है आप अपनी को अनकंफर्टेबल नहीं है बताइए कुछ कहना चाहिए जो भी आपके मन में अच्छा बुरा मैंने जैसे आपको पहले कहा मैं यहाँ हूँ और मैं एक औरत हूँ जो अपने बलबूते पे यहाँ हूँ तो आपको पता होना चाहिए किसी को भी कि मैं किस तरह की औरत या मर्द में बिलीव करती हूँ। मैं उस तरह की औरत में बिलीव करती हूँ जो चॉइस वो करना चाहती है वो करे और उस तरह की मर्द में जो चॉइस एक औरत ले उसको सपोर्ट करे। सो आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ वुमन, आई बिलीव इन दैट सॉर्ट ऑफ अ वुमन। आई थिंक इस तरह की अब्यूज़ या जो चीज़ें होती हैं ये आजकल अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में हो रही हैं और इम्पोर्टेंट ये है कि मैं और आप हम जिस तरह के लोग हैं जिनकी एक आवाज़ है उनको ज़रूर इसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास आवाज़ है उनके पास नहीं है। सो पीपल लाइक अस should raise our voices and we do that. So that's आखिरी सवाल जाते आपने सुना है कि फवाद के साथ आप अभी सीरियल में नजर आने वाली हैं। फवाद के साथ नहीं, फवाद के साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान लोग चाहते हैं कि हम एक साथ आएँ, जल्दी आएँ बहुत, पर आई थिंक अभी वो भी बहुत बिजी हैं, मैंने भी एक फिल्म साइन की है, सो इट्स गोइंग टू बी टफ, लेकिन इंशाल्लाह। Okay, Myra, are you leaving? So what the request was like you pout and flying kisses and everything. Okay, what do I have to do? Okay. आपको अपने बाएं राइट हैंड साइड पे आना है। और ट्रॉफी वाला हो गया। मैं ट्रॉफी पकड़ लेता हूँ। इसके साथ this is done. Just a pout or anything. Yeah, जो फोटो सेशन चल रहा है आपका, ये सारे कैमरे आपको Okay, I don't know what to do. Yes. That's fine. Make your lips like a bristle. पाकिस्तान वापस जा रहा है। Okay. Stop the passing. फोटोग्राफर तो नहीं है, तुमको समझना चाहिए ना एटलीस्ट। Such a surprise, right? No, not surprise. I'm mesmerized. Tell us something about your dress and your style. Well, I'm wearing Manika Nanda as you can see, but yeah, and this is Bogo and Reach Forever 21. I'm wearing Steve Madden heels and Shrija Rajgopal style me, and my makeup was Saitya Shetty, and hair was by Nafita from B Blunt. So yeah, that's the team. It was really nice. I actually came in late, but it was really good. Actually, some of my friends won. So like Elton Fernandez, who I work very closely with, also. So yeah, really nice. यानी अभी जो गाना आया है काला चश्मा उसमें आप ही हैं, तो क्या कहेंगे बहुत पॉपुलर हो रहा है गाना?
काला चश्मा पहले भी जो था गाना वो बहुत पॉपुलर था. हम स्कूल में जब थे हम सुनते थे. नहीं, काला चश्मा यही वाला गाना जो पंजाबी में था. Now Bacha has made it. It's a remake of the same song. It's arranged in a different way, much more catchy, much more today. And yeah, today it released and it's killing. Everyone's been talking about the song and all of us, and Katrina's abs, of course. You can't forget, not see them. They're stunning. So we're quite excited. I heard you sing better. Sing? Yeah. Sing a line for us. Kala Kala Chashma. Oh, not Kala Chashma? Yeah. No, I don't want to sing from Kala Chashma. I don't think so. कुछ और हो जाए. आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो. I have to. Thank you so much. All of you too. Thank you.